कृष्णा की गेंद हल्के से पुश किया, लेकिन सामने कोई रन नहीं। किशन मेघराज ने गेंद को फील्ड किया और वापस आ रहे हैं कृष्णा अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ी सी तेज गेंद, उसको कट किया है खूबसूरती के साथ। अच्छी बैकअप कर रहे थे, लेकिन एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ। पहले मिस फील्ड किया वहां पर अनिकेत लोहार और उनके छिपकती हुई गेंद, छटकती हुई गेंद गई थी, लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां पर राहुल पाटिल ने गेंद को फील्ड किया। और जब तक राहुल गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका था। थोड़ी सी तेज गेंद थी, उसको कट किया था पॉइंट की तरफ सरफराज मुल्ला, और इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 42 रन। इस बार फ्लाइटेड गेंद, अच्छा बैक टू द बॉलर ड्राइव। देखेंगे अभिषेक देसाई ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है वहां पर। अभिषेक देसाई अच्छे फील्डर माने जाते हैं, पैरों के सहारे से उन्होंने गेंद को रोका, अन्यथा निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। बहुत अच्छा क्रिकेट। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, बॉलर के बगल से ड्राइव किया था खूबसूरती के साथ, गेंद कारपेट के सहारे जा रही थी, लेकिन काफी तेज दौड़ लगाकर अभिषेक देसाई ने इस गेंद को पैरों के सहारे से रोका और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और रन संख्या 44। और इसमें हल्के से पुश किया उस गेंद को। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज, सरफराज मुल्ला और वैष्णव संघमित्रा। अच्छी साझेदारी चलती हुई, समझबूझ और तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे हैं, और जब भी रन बनाने का मौका मिलता है तो जरूर उस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में सफल हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज। समझबूझदारी बल्लेबाजी दोनों के बीच में चलती हुई। और गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली, लेकिन अंदर टप्पा खाने के बाद गेंद आउट स्विंग होकर बाहर जा रही थी। डॉट बॉल, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। इस बार उसको ड्राइव किया है, गेंद को जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, देखेंगे, और जाकर गेंद सीमा रेखा को छूती हुई 4 रन के लिए। 8 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 49 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और हॉप वाली बनाकर उस गेंद को खेला था पॉइंट की दिशा में, और गेंद पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन बने हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जबकि आज सुबह पहला क्वालिफायर मैच खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का, जबकि टॉस जीता था अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के कप्तान स्वप्निल लेड़वे ने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, और निर्णय भी काफ़ी हद तक उनका सफल हुआ है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। 117 रन पर रोकी है और 118 रन की मात्र ज़रूरत है, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफ़ी एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है। कब खेल करवट लेगा, किस ओर ऊंट बैठेगा, ये पता नहीं चलता क्रिकेट में। 37 रन की पार्टनर साझेदारी हुई है। जी हाँ, मेरे साथी रवि कन्मर्गी बता रहे हैं, सब स्टैटिस्टिक्स हमें देते हैं। 37 रन की साझेदारी हो रही है चौथे विकेट के लिए 32 गेंदों में। जी हाँ, जो पहला विकेट गिरा था 6 रन पर, और दूसरा भी गिरा था 6 रन पर, और तीसरा विकेट गिरा था 12 रन पर। अब शुभम गोंडवालकर एक लेग ब्रेक गेंदबाज, फुल टॉस, और उसको ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, लेकिन कोई रोक नहीं सकेंगे उसको। खराब गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाया सरफराज मुल्ला ने, और 50 रन भी पूरे होते हुए अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के 50 रन बने हैं। 53 रन 8.1 गेंद पर।
अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से खेला है, देखेंगे अगर स्टंप पर लगती है, और देखेंगे थर्ड अंपायर के लिए गए हैं। बहुत ही अच्छा थ्रो आया है वहां पर कृष्णा बागड़ी का, बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। देखेंगे थर्ड अंपायर के लिए गए हैं टीवी अंपायर टू डायरेक्टर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर कृष्णा बागड़ी ने की, बहुत ही पिकअप एंड थ्रो किया सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अच्छी दौड़ भी लगाई है। बहुत ही बढ़िया थ्रो और अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउट। बहुत ही बढ़िया थ्रो, हमें जरूर लग रहा था यहां से कि निश्चित रूप से बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कहूंगा निश्चित रूप से। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और एक बढ़िया साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हुए हैं, और इस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इस मैच को जीतना है और कम स्कोर को आप डिफेंड कर रहे हो तो आपको अच्छी कैचेस लेनी होंगी, ग्राउंड फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी, और रनआउट के जो मौके मिलते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करना होगा। और चेतन, मैं इस थ्रो के बारे में, इस विकेट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। Quite rightly, Mansoor. You know that they're just defending a moderate total of 118, for which they are giving a very tough fight, score being just 53 on the board, and the fourth wicket goes down. We have a match on. Let me tell you, it is not going to be easy for both the teams, and it is going to be a struggle and a hell lot of a match that they're going to play before it is completed. And the fourth wicket going down. What a piece of fielding by the fielder coming in quickly there, Krishna Bagadi, Kitty, and hitting it directly to the stumps. Only if you had to field it and just even give it to the wicketkeeper or the bowler, then the batsman would survive. But the kind of fielding that he did, a direct hit, this kind of fielding will not only take the wicket but also will improvise the morale of the fielding side. It will really boost up the morale, and the wicket goes down, begging fourth wicket. जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया चेतन। फ्लैटेड गेंद हल्के से कारपेट के सारे ड्राइव किया, वैष्णव संघमित्रा ने 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। चौथे विकेट का पतन हुआ। चौथे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। 34 गेंदों में 41 रन की साझेदारी वैष्णव संघमित्रा और सरफराज मुल्ला बना रहे थे, और सरफराज मुल्ला दुर्भाग्यपूर्ण कितने रन बनाए चेतन? सरफराज ने 20 रन बनाए शायद। जी हाँ, 22 गेंदों का सामना किया, 20 गेंदों में 20 रन बनाए। अब नए बल्लेबाज वसंत शाहपुरकर आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर वसंत शाहपुरकर, जो गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में मात्र 11 रन, अपने गेंदबाजी में 4 ओवर में मात्र 12 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की थी अपने टीम के लिए वसंत शाहपुरकर। एक अच्छी गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी में भी काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर, एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं अर्जुन फोर्स खोबरी के टाइगर्स की तरफ से वसंत शाहपुरकर, एक अच्छे क्रिकेटर। शुभम तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनके सामने है वैष्णव संघमित्रा। और फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक कि अभिषेक देसाई गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। एक अच्छी साझी चल रही थी वैष्णव और सरफराज मुल्ला की, और साझेदारी को कृष्णा बागड़ी ने तोड़ने में सफलता। और अच्छी गेंद इस बार राइट आर्म राउंड विकेट गेंद की थी उन्होंने, और गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी और पैर पर टकराई, और जब तक कि गेंद फील्ड होती लेग बाइज के रूप में 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बीच
ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन बने हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। खेल में रोमांच जरूर अभी भी बरकरार है। अभी भी कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी जब तक कि मैच की आखिरी गेंद नहीं फेंकी जा सकती। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफी खतरे से खाली नहीं है। एक बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है और बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है यह खेल, तो कहा नहीं जा सकता। इसीलिए काफी रोमांचक यह क्रिकेट पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि T20 खास कर तो बहुत ही इसमें रोमांचक बरकरार रहता है। कभी भी मैच में आप वापस आ सकते हैं। बहुत ही मौके हैं T20 क्रिकेट में। इट इज एनीबडीज गेम कहा जाता है क्रिकेट में, तो यहाँ पर मक्तेदारी नहीं चलती मेरे ख्याल से। और फिर से कृष्णा तैयार। फ्लाइटेड गेंद नहीं, फुल टॉस। फ्लाइटेड गेंद डालने का प्रयास किया लेकिन फुल टॉस बनाकर सीधा गेंद खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक अभिषेक देसाई गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया वसंत शाहपुरकर। रन संख्या 58। थोड़ी सी फील्डिंग में एक दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी अब थोड़ा सा परेशान जरूर फील्डर्स को। ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, उसको ठीक से खेल नहीं पाए, लेकिन गेंद ने बल्ले के नीचे से हिस्से से लगती हुई गई थी। एक रन आसानी के साथ। फ्लाइटेड गेंद थी, ठीक से खेल नहीं पाए थे, टाइमिंग कर नहीं पाए थे वहां पर वैष्णव संघमित्रा, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। रन संख्या 59 रन। और ये गेंद एक अजीब तरीके से खेलने का प्रयास किया। थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद थी, घूमकर उस गेंद को खेलना चाहते थे वसंत शाहपुरकर, लेकिन चूके और गेंद उनके बदन पर टकराई। कोई नुकसान नहीं हुआ। राइट आर्म राउंड द विकेट इन बिटवीन करते हुए और बैकफुट पर जाकर कट किया उस गेंद को। और सुधनवाद जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के साथ। और इस तरह से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 60, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। और रन संख्या 60। पटकी हुई गेंद इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद थे वहां पर। काफी तेज गेंद कराने का प्रयास किया था। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ ब्लेड गेंद थी, उसको खेला था वैष्णव संघमित्रा ने, लेकिन सीधे खेल बैठे वहां पर। अनिकेत लोहार थे फील्डर, फाइन लेग में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैक पर जाकर उस गेंद को खेला है सीधे फील्डर के हाथों में। सुधोरण कुलकर्णी खड़े हैं पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या होती हुई 60 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। और जलपान का समय घोषित किया है दोनों अंपायर्स ने, संजय रोकड़े और Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up, don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up, don't be scared. एक्स्ट्रा कवर 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, डिप लॉन्ग ऑन। फिर एक बार, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को स्टेयर कर दिया डीप थर्ड मैन की दिशा में। जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका वसंत शाहपुरकर को। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस 1 रन के साथ 4 रन पर जा पहुंचे वसंत शाहपुरकर और संघमित्रा खेल रहे हैं 25 रन बनाकर 22 गेंदों में। अब और 2 विकेट गेन करेंगे, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए। शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी तैनात किया है दीपक ने। फिर एक बार, इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी आई, इस गेंद को दिशा दिखाई, पॉइंट के बगल से गेंद को निकाला डीप थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को उठाते कृष्णा 1 रन लेने का मौका वैष्णव संघमित्रा को। इस 1 रन के साथ वैष्णव जा पहुंचे 26 रन पर। कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस गेंद को खेला है, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। लॉन्ग अप पर है कप्तान अभिषेक देसाई, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर सुधनवा, डीप एक्स्ट्रा कवर पर राहुल। फिर एक बार दीपक, अच्छी गेंद, इस गेंद को खेला है, स्वीपर कवर पर राहुल पाटिल खड़े हैं वहां पर। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका वसंत शाहपुरकर को। इस 1 रन के साथ वसंत शाहपुरकर जा पहुंचे 5 रन पर। कुल रन संख्या 65,
4 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा भागड़ी पॉइंट पर हैं, डीप थर्ड मैन पर कृष्णा है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर शुभम। फिर एक बार इस बार हवा में गेंद थी, फ्लिक किया था इस गेंद को, वडिश लॉन्ग ऑन पर नो मैंस लैंड पर गिरी। 1 रन लेने का मौका वैष्णव संघ मित्रा को, इस 1 रन के साथ वैष्णव जा पहुंचे 27 रन पर, कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 67 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चौपन गेंदों में 52 रन की जरूरत है यहां पर। नरेंद्र मांगोरे ने अपने 3 ओवर का कोटा पूरा किया, 14 रन खर्च के, एकमात्र सफलता उनके झोली में। ओमकार वेरनेकर 2 ओवर की गेंदबाजी किए, 8 रन खर्च किए, 2 विकेट लेने में सफल। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर ओमकार वेरनेकर द्वारा। कृष्णा भांगड़ी 3 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन खर्च किए। कृष्णा 1 ओवर की गेंदबाजी की, 10 रन खर्च किए। शुभम गोंदाड़कर 1 ओवर की गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए। दीपक राक्षे 1 ओवर की गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए। अब कृष्णा अपने कोटे का आखिरी ओवर सिटी पुलिस लाइन एंड से गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट। 13 रन की साझेदारी यहां पर चलती हुई 5वें विकेट के लिए। कृष्णा भांगड़े राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार और पिच गेंद थी, खराब गेंद, और इस गेंद को काफी बढ़िया शॉट यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ रन संख्या 70 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन पर जा पहुंचे वैष्णव संघ मित्रा। इसके बाद साई स्पोर्ट्स और केआर शेट्टी के बीच एलिमिनेटर मैच होगा यहां पर। फिर एक बार अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से खेला, जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का मौका वैष्णव संघ मित्रा को। इस 1 रन के साथ वैष्णव जा पहुंचे 32 रन पर, कुल रन संख्या 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा राउंड द विकेट गेंद करेंगे वसंत शाहपुरकर को। फिर एक बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर, डीप स्क्वायर लेग से। जब तक कृष्णा आकर गेंद को उठाते, किशन आकर गेंद को उठाते, 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे इस मैच में पकड़ बनाते हुए हुबली टाइगर्स, काफी अच्छी साझेदारी यहां पर चलती हुई 5वें विकेट के लिए वसंत शाहपुरकर और संघ मित्रा के बीच। फिर एक बार हल्के से खेला था, अच्छी फील्डिंग वहां पर फॉलो थ्रू में। बहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार कृष्णा राउंड द विकेट, इस बार हल्के हाथों से खेला, खराब फॉलो थ्रू में वहां पर मिसफील्ड होती हुई 1 रन वैष्णव के खाते में जाता हुआ। इस 1 रन के साथ 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद आना शेष है। गेंद करेंगे कृष्णा, स्ट्राइक पर है वसंत शाहपुरकर। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी तेज गेंद थी, इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया और डॉट बॉल के रूप में। 12 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 73 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। चार विकेट जो गिरे हैं, सपने रेलवे बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन में, गणेश कंगरालकर बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन में, सरफराज मुल्ला 20 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर रनआउट होकर वापस पवेलियन में। अड़तालीस गेंदों में 45 रन की जरूरत। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं
ओमकार वेर्नेकर अपने पहले स्पेल में 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, 8 रन खर्च किए थे, 2 विकेट लेने में सफल रहे थे। अब मोर्चे पे लगाया गया है ओमकार को, उनके सामने स्ट्राइक पर है संघमित्रा। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए ओमकार वेर्नेकर राउंड द विकेट। बार अच्छी गेंद, तेज गेंद थी, टपक आने के बाद बाहर की तरफ निकली, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग किशन द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर का होता हुआ। नो बॉल का इशारा यहां पर होता हुआ। कुल मिलाकर इस गेंद पर 3 रन आए और अब फ्री हिट यहां पर वैष्णव संघमित्रा को, माफ करना सरफराज वैष्णव संघमित्रा को। 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इस बार पुल किया है, फीट है वहां पर 1 रन पूरा होता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे पूरी तरह इस मैच में पकड़ बनाते हुए हुबली टाइगर्स, अर्जुन हुबली टाइगर्स की टीम काफी अच्छी साझेदारी यहां पर चलती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच आगे निकल कर खेला है ओवर द बॉलर हेड, और वहां पर अच्छी फील्डिंग है, बढ़िया फील्डिंग यहां पर अभिषेक देसाई। दूसरा रन दौड़ रहे हैं बल्लेबाज, 2 रन पूरे होते हुए। इस 2 रन के साथ रन संख्या 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ओवर द विकेट, इस बार तेज गेंद थी, कट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल के रूप में। 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर द विकेट। फिर एक बार अच्छी गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट पर, खिलाड़ी तैनात है, सुधनवा ने गेंद को उठाया, डॉट बॉल के रूप में गेंद। फिर एक बार ओमकार इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील वहां पर स्टंपिंग के, अंपायर पर कोई असर नहीं। फिर एक बार डॉट बॉल के रूप में। थर्ड अंपायर का इशारा यहां पर होता हुआ, अंपायर संजय रोकड़ी का इशारा होता हुआ थर्ड अंपायर के लिए। स्टंपिंग वहां पर किया गया था रोहित पाटिल द्वारा। नट आउट का इशारा यहां पर थर्ड अंपायर का डॉट बॉल के रूप में। विनायक कुंभार, डॉक्टर विनायक कुंभार नागर मुन्नोळे से यहाँ पर इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। इनका KR शेट्टी फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत किया जाता है यूनियन जिमखाना पे। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस गेंद को बैकफुट पर गए, पंच किया, स्वीपर कवर पर 1 रन मिलता हुआ वसंत शाहपुरकर को। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 80 4 विकेट के नुकसान पर। मंसूर बड़े भाई, जब 10 ओवर का खेल पूरा हुआ था, 60 रन बने थे, ड्रिंक्स ब्रेक के दरमियान
जब ऐसा लग रहा था कि मैच दोनों तरफा 50-50 चल रही है, अब यहाँ 3 ओवर में 20 रन की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच और पूरी तरह इस मैच को अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने अपने शिकंजे में जकड़ के रखा है। मंसूर बड़े भाई। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शुरू के धक्के लगे थे, उसके बाद जो साझेदारी बन रही है लगातार, पहला विकेट गिरा था 6 पर, दूसरा भी 6 पर, तीसरा 12 रन पर, उसके बाद में जो है साझेदारी हुई थी चौथे विकेट के लिए सरफराज और 41 रन के वैष्णव के बीच में 41 रन की साझेदारी हुई थी। लेकिन उसके बाद अभी भी 5वें विकेट की भी साझेदारी जो चल रही है, 27 रन की साझेदारी चल रही है। तो ये जो साझेदारी जो चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नासिर जी जी बिल्कुल। जिस तरह का क्रिकेट होता है, क्रिकेट खेल में ऐसा है, 10 ओवर चाहे 10 ओवर हो, शॉर्ट फॉर्मेट या 20 ओवर का हो या 50 ओवर का हो, साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रहती है। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं शुभम राउंड द विकेट। वसंत शाहपुरकर को इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में अभिषेक देसाई। जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस मैच का मैन ऑफ द मैच का परिदर्शक देने के लिए हमारे मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं गेस्ट श्रीमान अमान सेठ। इनका भी KR शेट्टी फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत किया जाता है। फिर एक बार शुभम ओवर द विकेट, इस मर्तबा वैष्णव संघमित्रा को 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, इस गेंद को कवर्स के बगल से गेंद को निकाला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। अभिषेक देसाई कप्तान खड़े हैं, काफी अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वैष्णव संघमित्रा को। इस 1 रन के साथ वैष्णव जा पहुंचे 37 रन पर, कुल रन संख्या 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार फुलटॉस गेंद थी, इस गेंद को बॉलर के बगल से खेला है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। जब तक गेंद को उठाते अभिषेक देसाई 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीस रन की साझेदारी यहां पर चलती हुई 5वें विकेट के लिए। फिर एक बार शुभम और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, बाहर निकल रही थी, हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। कृष्णा ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। फिर एक बार शुभम सिटी पुलिस लाइन एंड से। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को इनसाइड आउट खेला है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। काफी बढ़िया शॉट यहां पर वैष्णव संघमित्रा का। इस 4 रन के साथ वैष्णव जा पहुंचे 41 रन पर, कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में और 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ। एक बड़ा धक्का, 34 रनों की साझेदारी यहां पर खत्म होती हुई 5वें विकेट के लिए और वैष्णव संघमित्रा 41 रन बनाकर वापस पवेलियन में। क्या गेंद फेंकी थी यहां पर शुभम गोंदवाड़कर ने। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अब बढ़िया कैच यहां पर विकेट कीपर रोहित पाटिल द्वारा। इस तरह से 14 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 87 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Again played with soft hands there. The ball, good bowling there by Deepak Rakshi, not allowing the batsman to swing his arms freely, keeping it neat and tight to the batsman. Again playing a defensive shot for a dot ball. Again cut it there, this time to the point, direct hit maybe, but then again the ball being slipping out of the keeper's hand there. Maybe if he had to collect it neatly and take the bails off, he would have been in a difficult situation. Lucky survival for the batsman, I would say. First the ball had to hit the stumps directly. You can't expect every time the fielder hitting the stumps directly. Keeper behind the stumps with his gloves on has to come quickly, collect it and flash off the bails. But before he could collect it neatly, one run for the taking and the batsman survives. With that single, the scorecard for that ticks along to 89 for the loss of 5 wickets. The 29 more required of 32 deliveries left over in this innings and match been completed. And played it up his league. Rise of catcher this time. A big mistake by the point fielder there. We got to wait and watch. A lucky boundary for the batsman at the bat of Vasant Shapurkar. With that boundary, 4 more runs for the taking. Not only the boundary, a chance goes beginning there. It was an easy catch into the hands of the fielder there at point. It was Sudanva Kulkarni there. He had all the time in the world to take that, diving forward, trying to catch it, missed it completely in the end. Not only did he miss it, a chance given, and also 4. This is add insult to the injury. Wicket is gone and also a boundary. Again trying to drive it into the hands of the keeper. Sorry, into the hands of the fielder at the cover region, Kishan Meghraj.
for a dot ball. With that dot ball, it also completes the over after the completion of 15 overs. Scorecard reading 93 runs for the loss of 5 wickets. Well, to tell you that not really much of partnership except for the 4th and 5th wicket that we saw. The partnership of between Sarfraz Mullah and Vaishnav Sangmitra, which gave them a partnership of 41 runs. Then it was Vasant Shapurkar and Vaishnav Sangmitra together put on 34 runs. Now that those two partnership has taken them close to the match, close to the total of that what they are chasing to win this match of 118. Well, to tell you also that two chances went down begging in this over. One of the run out at the hands of the wicketkeeper. If he had to collect it neatly, maybe Vasant Shapurkar would have been back home in the dugout. And also a lofted drive, the catch going down at the hands of Sudanma Kulkarni, and also boundary there for the picking with that over being completed. A flighted delivery, full pitched into the block hole. Santosh Patil digging it out of the block hole and just playing it into the short point region for a dot ball. Again trying to drive it straight to the fielder. This time Sudanva there in the short cover region fields it for another dot ball. Every dot ball will be encouraged. Let me tell you, we have a match on. Another dot ball there into the block hole. So 3 dot balls in succession, and in succession this will add a lot of pressure to the batting side and the batsman. Nevertheless, another 25 more required from 27 deliveries. Slightly short of length, cut it there, straight to the field again. Kishan Mehraj this time in the gully region for another dot ball. So this is good bowling there. 4 dot balls in succession by the bowler Shubham Gaundwadkar. Well, he's pitching it up to the batsman in the block hole, asking him to cut him, drive him. Every time Santosh Patil respectfully playing it, getting a dot ball. That dot ball score still stands at 93. Flighted delivery, played it upishly, cries of catch it, and he gets all the runs of the over with that huge 6. What a shot that is at the bat of Santosh Patil. This time Shubham Gaundwadkar missing it completely and pitching it on the full toss given to the batsman, and batsman Santosh Patil capitalizing it to the fullest and taking all the juice of that ball for a huge 6. With that 6, the scorecard ticks along to 99. Another delivery before the completion of this over. Well played with soft hands, just steering it down towards the gully region. Krishna Bagadi coming in quickly and fielding for a dot ball. Nevertheless, with that 6 runs coming of that over, and they just required another 19 more runs required of 24 deliveries left over. 19 runs of 24. If at all Sairaj have to win this match, they have to pick up some wickets, try and strangulate both these batsmen out there and make sure that Arjun Sports Hubli Tigers do not win this. Meanwhile, Arjun Sports Hubli Tigers will want to win this match by pretty comfortable. They are least bothered about the run rate or the wicket. They have to just win this. This is the first qualifier, and whoever wins this match, either Arjun Sports or Hubli Tigers or Sairaj Warriors, they will straightway go to the final day after tomorrow, the big final to be played of the second edition of the KR Shetty T20. And well, also there is some encouragement there. If whoever loses this match, they still have another chance to play the second qualifier tomorrow. So you can't lose heart there for this match. But the crucial one is in the afternoon, the eliminator between KR Shetty Kings versus Sai Sports. That is going to be a high voltage match this afternoon. Well, appeal there, but up goes the finger and they do what they are wanted. Sairaj picking up that wicket in the form of 6th wicket. Vasant Shapurkar goes back now, trying to cut him there. Good catch there by the keeper, standing up to the stumps there. Omkar Vernekar does the job again for himself and the team. Picks up that 6th wicket in the form of Vasant Shapurkar, who managed to get 16 runs of the 22 deliveries. It is Dhyanesh Hongekar walking onto the crease at the fall of Vasant Shapurkar. There's plenty of batting depth left in our.
Well, Mansoor, what do you think? Where is the match going down here from here on with 6 wickets gone down for Arjun Sports Hubli Tigers? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के पीछे, भरमार है बैटिंग लाइनअप की उनके पास। अब देखिए फिर से ज्ञानेश होनगेकर आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनके पास भी क्षमता है रन बनाने की, तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है अर्जुन स्पोर्ट्स के पास। लेकिन मैच काफी रोमांचक चल रहा है, अभी भी मौके हैं, कहा नहीं जा सकता। एक आधा ओवर आप आईपीएल में भी देखते हैं 4-4 विकेट गिर रहे हैं एक ही ओवर में, तो ऐसे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्यों नहीं। अगर हैट्रिक का मौका, अगर हैट्रिक लेंगे इस ओवर में या 2 विकेट और चटकाएंगे तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से फिर से वापसी हो सकती है। तो यही तो क्रिकेट है, इसके अंदर हार मानना नहीं चाहिए, आखिर तक लड़ते रहना चाहिए, और ऐसे लड़ रहे हैं जरूर साईराज वॉरियर्स के खिलाड़ी। जी मंसूर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों टीम बखूबी लड़ रहे हैं, कोई गेम को छोड़ना नहीं चाहता है, वो दोनों ही टीम, चाहे वो सैराज वॉरियर्स क्यों ना हो या अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स हो, दोनों टीम जीतना ही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो ये मैच जीतेंगे तो वो स्ट्रेट फाइनल में प्रवेश करेंगे, फाइनल खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। वो दोबारा एक सेकंड क्वालिफायर खेलकर फिर फाइनल पहुंचने से बेहतर है कि यहाँ पर आप फाइनल यहाँ पे जीतो और स्ट्रेट वे फाइनल में प्रवेश हो जाओ खेलने के लिए। वेल, कमिंग बैक, इट इज ज्ञानेश होनगेकर हु हैज कम ऑन टू द क्रीज एट द फॉल ऑफ वसंत। ओमकार वेर्नेकर to ज्ञानेश, going to the back foot and just playing it with soft hands, driving it single-handedly towards long off, and with that single, 100 comes up on the board for Arjun Sports Hubli Tigers. Good 100 runs. They just need another 18 more now from 22 deliveries left over before the completion of this innings and match. Again, getting the bat down quickly there. Santosh Patil just playing with soft hands, wanting to maybe, but they'll have to settle down for a single. Good fielding there by Deepak Rakshe, coming in from deep. Swipakava. Quickly does he come in and field, single-handed pick up and throw on the bounce to the wicketkeeper for a run. With that single, the scorecard further ticks along to 101 for the loss of 6 wickets. They need another just 17 more of 21. Again, trying to make some room there. Danesh Kongekar driving it all along the carpet towards wideish of long on. Abhishek Desai comes in and fields. One more for the taking. With that single, the scorecard ticks along to 102 for the loss of 6 wickets. Dhyanesh Hongekar is batting on 2 runs of the 2 deliveries, and Santosh Patil is batting on 8 runs of the 10 deliveries. Again, trying to cut it. We got to wait and watch. Maybe the ball hitting the wicketkeeper. Also of the edge. No indication from the umpire. That means it is the edge of the bat. Lucky survival, and one more for the taking. With that, another single added on, and the scorecard ticks along to 103 now. And this time driven straight. Sudan was there in the short cover region, trying to field it, but they'll have to settle down maybe for a single. No, says Santosh. He knows that he was one of the better fielders. That is Narendra Mangore. Bablu, better fielders in the side, fielding it well enough just to give away a single. With that single, it also completes the over. So after the completion of 17 overs, scorecard reading 104 runs for the loss of 6 wickets. They need another just 14 runs. Arjun Sports Hubli Tigers need another 14 runs of 18 deliveries left over before the completion of this innings and match, with 4 wickets to spare with them. Meanwhile, Sairaj Warriors would be thinking maybe they would have got another just 10-15 runs extra. They would have pressurized. Well, that is all history now. Whatever they have on the board, they'll have to defend, and they're done well enough to do that. Up till now, Sairaj Warriors have just not given any easy runs, and they've also picked up 6 wickets. So once again, change in bowling after 17 overs. It is Shubham Gondwadkar coming into the act with his bowling quotas. 4th and innings 18th over to the batsman Dhyanesh, going onto the back foot and driving him towards long on. Deepak Rakshe comes in and fields 1 run for the taking. With that single, the scorecard further ticks along to 105 runs for the loss of 6 wickets.
Short of length there, trying to ball that flipper one. Pitching it very short of the length, going on the back foot, and again driving him off the back foot towards long off. Abhishek Desai comes in and fields. One more for the taking. With that single, the scorecard for the Limbs along to 106. Arjun Sports Hubli Tigers are also not in a hurry to hit some big hits, and maybe they're just playing to the merit of the ball, trying to rotate their strikes, taking ones and twos. Not even twos, they're just satisfied with the ones. They know that if they just go on taking singles, they will just make it through. Even they can afford to give a dot ball occasionally. Once again, Shubham to Jnanesh. Flighted delivery, trying to hit a big one there. We got to wait and watch. One more for the taking. Bye signaled by umpire. With that bye, another run added on to the total, and the scorecard ticks along to 107 for the loss of 6 wickets. Trying to hit a big one. We got to wait and watch. Ravlu Patil comes in quickly and fields there. Just one for the taking. Another bye signaled. This is sloppy fielding by wicketkeeper. This is not accepted at any form of game, and especially in the death overs. Another bye there to add on to the total. With that, the scorecard ticks along to 108 runs now. Stenmo needed of 14. Trying to hit a big one into the block hole. Driven it all along the carpet. Towards long on, Deepak Rakshe comes in and fields to give away a single. With that single, the scorecard ticks along to 109 runs. They're inching closer by the minute as the time passes by. That gets Santosh Patil on strike, who's batting on 10 runs. Again, played off his pads towards wideish of long on. Deepak Rakshe coming in quickly and fielding. The batsmen have to settle down for a single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 110. It also completes the over. So after the completion of 18 overs, scorecard reading 110 runs for the loss of 6 wickets. Well, a good small partnership has built between Jnanesh Hongekar and Santosh Patil, that of 11 runs of 11 deliveries. A small 11-run partnership between these two batsmen. And to tell you that they just require another 8 runs from 12 deliveries left over in this match. Also, it has been told that the next eliminator match that we are going to have is between KR Shetty Kings versus Sai Sports. That is going to be a very high voltage match. I request both the team captains or at least a representative to collect the list from the commentary box and submit it quickly. Sai Sports captain and KR Shetty Kings, both, if you can just take the list and submit it quickly so that we can get along with that next match. Narendra Mangore comes up with his bowling quotas 4th over and innings 19th over to the batsman Santosh Patil. Omkar Wernikar has bowled 4 overs, given away 20 runs, picked up 3 wickets, an economy of 5, and Krishna Bagadi has bowled 4 overs, given away 27 runs, economy of 6.5. No wickets for him today. Shubham also has bowled 4 overs. Short of length, played it up pitchly there. Oh, chance of catch there. The ball brushing the fingers of Kishan Meghraj there, and boundary for the taking. With that boundary, the scorecard ticks along to 114 now. Just 4 more needed of 11 runs. He had created a chance and opportunity. Narendra Mangore bowling that outside off stick, asking the batsman to cut him and hit him loftedly. And Kishan Meghraj in the gully region, he had to jump. Had to time his jump to perfection to take that catch. The ball just brushing the fingers maybe and going towards the boundary, towards third man. With that boundary, Santosh Patil goes to 15 runs of 15 deliveries, and the scorecard reading 114. 4 more needed. Played it upishly there. Cries of catch it towards the extra cover. Omkar Wernikar coming in from mid-off and fielding it. Meanwhile, 2 more for the taking. With those 2 runs, his scorecard moves to 116 now. Just 2 more runs required of 10 deliveries. Well, nothing really now. You can certainly ascertain that it is Sairaj Warriors who's going to play that second qualifier tomorrow. And Arjun Sports Hubli Tigers will certainly play the final the day after tomorrow.
With this win, they are going to get into the final now. Slightly short of length there, and wide signaled by umpire Nikhil, acknowledged by my scorer. One more for the taking with that wide, and the score's level now, 117. Just one more run needed now of 10 balls left over. Again played with soft hands there, wanting a single, a direct hit. We got to wait and watch, but in the end, with that one run, the match comes to an end there, and 118 on the board. So in the end, Arjun Sports Hubli Tigers win comfortably with 4 wickets to spare. And let me tell you that they are going to play the big final day after tomorrow. So Arjun Sports Hubli Tigers enter the final. And Sairaj Warriors will get another opportunity to play another qualifier. And then if they win that, they will get a chance. It is completion of the match, and we go to the presentation ceremony from here on. I request both the teams to please come for the presentation. Thank you. Arjun Sports Hubli Tigers and Sairaj Warriors.
both the teams, please come quickly for the presentation. Thank you. Come on, boys, please come quickly. We have the guests waiting for you. Sapni Dalve, the captain, please get a team. Also, Sairaj Warriors, Abhishek Desai, if you can please get a team. Thank you. We have the guests waiting, my friends. We have another match on hand, the Eliminator. So if you can please come quickly, it would be of great help. Thank you. Well, Sairaj Warriors, if you can come quickly, we'll finish off the presentation. Thank you. Abhishek. Let me stay with you. Even asking you just one night. I don't know about your life, but tell me 'cause we still have time. I can't stop looking at you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop looking at you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. के रत्नाकर मेमोरियल T20 टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है सीजन 2, दूसरा सीजन यहाँ पर चल रहा है के रत्नाकर SHETTY मेमोरियल T20 ट्रॉफी का आज का पहला दिन, पहला क्वालिफायर मैच है। मतलब आज का पहला क्वालिफायर मैच हुआ था अर्जुन स्पोर्ट्स ब्लू टाइगर्स वर्सेस साईराज के बीच। टॉस से यहाँ पर जीता था। अब अर्जुन स्पोर्ट्स ब्लू टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया था साईराज को। 117 रन बनाए थे, 118 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा था और उस 118 रनों का लक्ष्य पूरा किया है
हुबली टाइगर्स ने और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम हुबली टाइगर्स की और के.आर. शेट्टी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है इस के रत्नाकर शेट्टी मेमोरियल T20 ट्रॉफी और पूरा श्रेय जाता है प्रणय शेट्टी और उनकी टीम को। काफी बेहतरीन यूनियन जिमखाना मैदान को दुल्हन की तरह सजाया इस टूर्नामेंट के लिए और सारे मचल रहे हैं इस मैदान पे खेलने के लिए। जैसे सपने हुए अभिषेक देसाई के चेहरे पे मुस्कान दिखिए, दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पे मचल रहे हैं इस मैदान में खेलने के लिए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला क्वालिफायर मैच का मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक दिया जाएगा वो टू चेतन बाइलोर। Thank you, Nasir. We are here for the presentation of the match played, the first qualifier between Arjun Sports Hubli Tigers versus Sai Sports. First and foremost, I request Salman, if you can just get the guests, that is none other than Aman Seth, if you can please come up here, along with Sugi Sudhakar Shetty and Sudhakar Shetty, Yatiraj Shetty and Rajit Shetty. Well, these are the gentlemen. Boys, if you can just put your hands together for these people. Aman Seth, Sugi Sudhakar Shetty, Yatiraj Shetty, Rajit Shetty, Sanat and Kavana Shetty. If you can please come up here. Thank you. Boys, just put your hands together for these gentlemen who are here. And first and foremost, we like Pranay to honor and felicitate them. First, to begin with, you can honor Aman Seth. Well, Aman, if you can just give. The next we have is Sugi Sudhakar Shetty. Next we have Sudhakar Shetty. Yatiraj Shetty. Ranjit Shetty. Moving on, right? Kavan. And one remains, I think. Okay, boys, first and foremost, losing captain, if you can come up, I'll just finish quickly. First and foremost, hard luck. आप अभी हार रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप मालूम है आप ये पहली क्वालिफायर खेल रहे हो, आपको और एक चांस मिलेगा. What went wrong today? क्या गलत हो गई? साइराज जैसी बड़ी टीम, I was telling you, एक बार एक धक्का लगेगा, गलत टाइम पे लगा. पिच तो ऐसा नहीं था सर बैटिंग के लिए, तो हम जो सोचे थे 150 तक का, तो 20-25 रन कहाँ तो कम पड़े, लेकिन बाद में जो फील्डिंग की वजह से मैच आ रहे हैं, वैसे जो बॉलिंग तो ठीक हुआ था.
बॉलिंग ठीक हुआ था, काफी विकेट छटकाए थे आपने, आपको पता नहीं 8 ओवर पे आप भी उतने रन पे थे 3 विकेट के साथ जितना वो लोग भी कर रहे थे। कहीं रनआउट और कैचेस मिस हुए आपके बहुत सारे, क्या कहना चाहोगे अपने टीम से? वही सर, थोड़ा सा 2 सीनियर प्लेयर नहीं आए थे, उसके लिए से वो जो यंग प्लेयर था रोहित खेला अच्छा किया उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड की वजह से 2 रनआउट की वजह से मैच गया सर थोड़ा सा। Don't worry, you still have a chance there. It is not the end of the road. Though you lost this thing, you still have a chance to play the second qualifier tomorrow after the eliminator this afternoon. Hard luck today, but all the best for the second qualifier. जीते तो शायद फाइनल होते, लेकिन अभी भी एक चांस है फाइनल पहुंचने के लिए, तो don't lose heart and play brave. Thank you. Okay, thank you sir. Thank you very much. That was the losing captain. Now the winning captain, Swapnil Elve. Well, Swapnil, a big smile on the face. क्या सोचा था कि ऐसे होगा? सर ऐसे सोचा नहीं था, पर जो हुआ अच्छा हुआ सर। जो हुआ अच्छा हुआ। आप पूरे श्रृंखला में नंबर 1 पोजीशन पे थे। Just before playing the qualifier, you went to number 2 position. Sairaj overtook you and number 1, but you knew that you were going to play the first qualifier. तो ये फर्स्ट क्वालिफायर खेलकर आपने जीता है, नंबर 1 टीम को भी मारा है। पता नहीं कौन खेलेगा, लेकिन एक बात तो सच है और तय है कि आप फाइनल खेलेंगे। हाँ सर खेलेंगे, अभी जो टीम आएगा उनके साथ ही खेलेंगे सर। वेल सेड। कुछ खास कहना चाहोगे? आपने बहुत कई रन होंगे, 117 पे रोका, शायद और कम रोक सकते थे, या 117 आपके लिए ऐसे लगा था कि 150 है, क्योंकि 3-4 विकेट बहुत जल्दी गए, आपका विकेट गया, फिर गणेश का विकेट गया। सर लो स्कोरिंग गेम था और बॉलर्स ने बखूबी अपना काम किया था, बैट्समैन थोड़ा इधर उधर हो गए, पर संतोष एंड वैष्णव एंड दैनिश ने अच्छा फिनिश किया। वेल सेड। और वन लास्ट थिंग, फाइनल के बारे में कुछ सोच रहे हो कि बस एक और मैच है और वैसे ही खेलना है, और क्या कहना चाहोगे लड़कों से? एज ए नॉर्मल गेम ही खेलेंगे, फाइनल है ऐसा सोच के कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। Congratulations today and all the best for the big final day after tomorrow. I know you and your entire team will be having all the eyes on the eliminator today and the second qualifier tomorrow. Thank you sir. Thank you very much. All the best. Thank you. Moving on. Well, moving on, we have plenty of awards to be given away. First and foremost, for the maximum sixes, this to be given away by Yatiraj Shetty. It goes to Shubham Gandwarkar for the 6. Next, I request Sudhakar Shetty for the best catch, and no doubts for that. We had a couple of catches, and it goes to that one who took a beautiful catch in the gully. Spectacular to watch one. It is none other than Parikshit Okund. The next we have is the impact. We have to decide who to be the impact. The jury, the commentators panel and the committee had to decide, and this award to be given away by Sugi Sudhakar Shetty. It goes to none other than 16 runs, 22 balls, 4 overs, 13 runs, 3 wickets. Vasant Shapurkar, impact player. You get a beautiful trophy and also a shaker to have some juices and diet. Thank you very much. Last but not the least, we had to decide who to be the man of the match, and it was decided, a tough one to decide for. In the end, it was decided with 1 boundary, 34 balls and 41 runs. Vaishnav Sangmitra, man of the match today. First and foremost, congratulations, Vaishnav. Thank you, sir. Thank you. It's a good feeling to enter in the finals. So yeah, it's good feel. How does it feel to take the man of the match? You have taken many man of the matches earlier. How does it feel to take the man of the match in the big first qualifier that you're playing? Yeah, it's my second man of the match in this tournament. Yeah, it feels good in this big tournament against good team. Yeah, it feels good. Really feels good when you take a man of the match against one of the better sides like Sairaj Warriors. So can we expect one more in the big? Now you know that you're going to play the final. We don't know
whom you are going to play against. But can we expect one more big knock in the big final? I hope so. All the best, and you enjoy like this and entertain us. Keep winning matches and also getting man of the matches. Thank you very much, Vaishnav, for enjoying and entertaining us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I request Ranjit Shetty of Panjurli Hotel to please come forward. I request Pranay to honor you. Thank you. And now I request Aman Seth to please give the man of the match award to Vaishnav Sanghmitra. Vaishnav, come up. Aman. Well, you get a beautiful trophy, a t-shirt, and also this thing has to be visible. You also get a DTH connection from Metrocast for 1 year subscription free worth 7,500. We really thank Nagesh Chabria and the CEO Sumok Chabria for providing this sponsorship. Thank you very much. Thank you all. Well, if everybody can wait, we want to photograph. Well, thank you very much. That is all that we have from the presentation party this afternoon. Thank you all the Shettys and the man of the match and impact player. Thank you very much, and for you people it is good night. Well, the next match that we have is between Sai Sports versus KR Shetty Kings. Both the captains please come on to the pitch for the toss. Thank you.